Assalamu alaikum dosto, welcome to my YouTube channel. This is Sayyid Ali. I am actually from Multan, Pakistan, but I'm living in Virginia, USA. आज की वीडियो US visit visas questions के हवाले से होगी. Little background about myself. I lived in UK about 10 years where I did my MBA and I decided to move to United States. Right now I'm working as a IT system analyst. Also I'm running my business in financial industry. तो टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे वो क्वेश्चंस के हवाले से है जो कि वीज़ा ऑफिसर या काउंसलर आपसे पूछते हैं on the day of your interview. First thing, which is very important, never be late on your interview. Please get there ahead of your time. Um, दूसरी चीज़ ये है कि obviously you'll be called at your number at the window where the visa counselor will be waiting for you to start the interview. जब आप विंडोज पे जाते हैं तो first thing, very important, is that you need to be calm, you need to be confident, and you need to make an eye contact. This is very important because your body, um, um, what you call is the body language is very important. वीज़ा ऑफिसर ये एक आपका एक तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन होता है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको नहीं जानता लेकिन द वे यू अप्रोच टू द विंडो ऑब्वियसली जब आप विंडो पे जाते हैं आप ग्रीट करते हैं उनको गुड मॉर्निंग हाय सर हेलो गुड मॉर्निंग this is the way to start at the you know at your interview. um, so always make an eye contact. This is very important. तो उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेंगे वो ये होगा कि मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़. दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि वो अपना पासपोर्ट दे थ्रो देयर पासपोर्ट ऑन द काउंटर which is very a negative approach, I should say. जब भी आपसे वो पूछें may I have your passport, first thing, make an eye contact while you're handing over the passport and say, here you go. Say something. Never be quiet when you're doing something. अगर कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं पासपोर्ट देने हैं make an eye contact and say something. So when they ask, may I have your passport? You should say, sure sir, here you go. This is my passport and hand it over to them. सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो पॉइंट ये है कि दे वुड आस्क यू हाउ लॉन्ग यू आर इंटेंडिंग टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो योर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने कितना स्टे करना है यूएसए में. ठीक है. 2 weeks है, 1 month है, 2 months है, 1 week है. This answer should be simple and straightforward. Never be reluctant. Never be, like double-minded. Oh, I'm staying. I don't know. Maybe I'm not sure. इस तरह का जो response होता है, this is very negative. Just tell them I'm staying there for 2 weeks. Simple. इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनी वीज़ा इंटरव्यू दे एनी वीज़ा ऑफिसर वुड आस्क यू इज़ दैट व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ द विजिट. आपको पता होना चाहिए आपका आप आइदर यू आर देयर फॉर a business conference, are you going there to visit your family, your friend, or just for pleasure. तो इसका भी जो आंसर होता है वो ऑलरेडी यू शुड
बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यानी कि वहाँ पे जाके आपने अ, इस क्वेश्चन पे नर्वस नहीं होना कि आपको पता ही नहीं है कि आप यूएस से आ रहे हैं और आपने क्या कहना है उनको। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर विजिटिंग few states, you're you're going to visit your friend who's living in Virginia, in Washington DC, or you're going to um, Disneyland for example. um, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि what is the purpose of your visit. This is very important, and that can have a great impact on the whole interview process. um, इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि they can ask you what do you do in Pakistan or in any country that you're living in. तो इसका भी क्वेश्चन यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, यू कैन टेल देम ओके आई एम स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, या you're a college student or whatever. um, और इसके अलावा अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इतने टाइम से मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब, यू आर गोइंग on a visit visa to United States, so it will be like a red alert on their mind. So be realistic, but never mention that you're not sure, you're not currently working, or you are in between switching jobs. तो इसमें थोड़ा सा उनको शक होता है कि you might be going to United States for any kind of work or any kind of opportunity. So इसमें भी be straightforward and realistic what you actually do, and you should be prepared for this question. um, एक और क्वेश्चंस आपसे ऑफिसर पूछ सकते हैं कि or mostly they ask you if you're traveling alone or you're accompanied with someone. तो इसमें भी ऑलरेडी आपको इसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, यू जस्ट टेल देम ओके आई एम गोइंग ऑन माय ओन, or if you are traveling with your friend or family member, so you should mention this as well. इसके अलावा very important question a visa officer should ask you is that do you know someone in United States? This is very tricky question. इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपके यहाँ पे रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर हैं जिनको आप विज़िट करने जा रहे हैं, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट। or agar if you are just going on your own, you don't know anyone, just tell them that I'll be on my own, I don't have any family or friends. But this um, question will be easy for them to pick. There would not be any further related questions. अगर आप फैमिली मेम्बर्स को विजिट करने जा रहे हैं, that also will um, raise some kind of red alert in their mind. So they can also ask you what the person is doing in USA. तो उनके हवाले से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेवर लाई टू देम, यानी कि अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम, or if they are started asking you questions, then it's going to be a big trouble in your interview. So be realistic and tell them if you know someone, just be straightforward uh, in your answer. और दूसरा जो है एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू यूएस बिफोर? तो आई मीन द आंसर शुड बी सिंपल, either yes or no,
क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती हैं, बट द रीज़न दे आस्क यू दीज क्वेश्चंस अगेन इज जस्ट दे वांट सी योर, दे वांट हेयर फ्रॉम यू। उस टाइम में never get nervous, you know, you should already know these answers. If you never been to US before, just tell them I never been to US. If you've been to US before like 10 years ago, आप उनको वो बता सकते हैं. But be confident. Any answer you give them, you need to be confident and make an eye contact. This is very important. Um, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो ऑलरेडी आपने अपनी एप्लीकेशन में भी मेंशन किया होगा. वेयर विल यू बी स्टेइंग? Is it going to be a hotel if you don't know anyone, or if you are staying with your family or friends? So they can ask you that questions too. So be realistic and answer your questions with a good confident, and have a little bit smile on your face. um, and please make a eye contact while answering the questions. Don't look around and talking to the person in front of you. अगर आप उनसे you know इधर उधर देखेंगे और आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो they would just think that you are just making it up. So make sure that your answer should be straightforward and you have much details to cover your evidence, right? अगर कोई भी questions है, you always can cover it up with your reasonable answer. तो ये आज की हमारी वीडियोस थी. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, लेकिन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी आपको वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चंस हो, या आपका ऑलरेडी इंटरव्यू स्केजूल हो गया है और आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा. यू कैन व्हाट्सएप मी, ईमेल, anything, and I'll answer your queries. Thank you for watching this video, and I'll see you next time. Bye bye.